हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल? सो टुडे आई एम डूइंग कार्ड रीडिंग अगेन इन फ्रंट ऑफ यू with my face. So I'm just shabby in my shabby look today, so please ignore that. So uh, today I'll be like, as yesterday was new moon, so I decided to take out card for you one as a card of the day, and you will get to know if it resonated with you, it's a good, or if it's not resonating with you, you can skip my reading, it's okay. So let's see what is your card of the day. I'll be using my Muse Tarot and Moonology cards and Angel Romance as usual for love. So let's see what is your card of the day. Angel Spirit, I invoke you today to help my clients. Help me for the card of the day. What is the card of the day? Angel Spirit, please guide me. Spirits, please guide me. Spirits, please guide me. Spirit, please guide me with the card of the day. Spirit, please guide me with the card of the day. What is the card of the day? I feel like you guys are too much of overthinker over here. आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हद का. The moon, as I told you, are overthinking. You are totally overthinking right now. And another card wants to come out over here. So let's see. This is Five of Voices, Five of Wands. Let's see another card of the day. Then I'll switch to with my Moonology cards. Okay, Three of Wands, too much of Wands. Okay, I feel like you guys are waiting right now. आप लोग बहुत चीज़ों का वेट कर रहे हो यहाँ पे. प्लस मैं ये भी बता दूँ, आपके जो मुझे सन साइन दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर साइंस है, सन मून राइजिंग. आप लोग अपनी बर्थ चार्ट में चेक कर लीजिए. दो आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम जस्ट अ साइकिक, प्लस आई एम अ टैट कार्ड रीडर एंड हीलर. सो मैं ये बोलूँगी आप लोगों को, आप लोग अपना बर्थ चार्ट सर्कल चेक कर लीजिए. यू मे गेट योर sun moon rising, what it is not. So do check your sun signs and moon signs, especially moon signs and ascendant, and check your 7,000 Saturn and 5,000 Mercury. You may get many answers who can be your future spouse or divine counterpart. Okay, because मेरे को बहुत लोग आते हैं कि हमारी डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है, प्लीज़ लेट अस नो बाय आवर सन मून राइजिंग. सो आई से लाइक कार्ड्स बहुत सारे बता देते हैं उसमें, सन मून राइजिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के, आपके क्रश के, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की. सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो एग्जैक्ट वॉट whom you will be meeting next, check out your 7th house in Saturn and Venus. You will get your answers who can be your future spouse and when you can meet them, and it will be exact happening in same timing. Okay, so yes, definitely there is Five of Voices, Three of Voices. सो डेफिनेटली मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर, एक तो राइट नाउ आपका मामला बहुत ज़्यादा शांत है. आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो इस वक्त. राइट नाउ यू आर इवन वेटिंग. आप लोग बहुत चीज़ों में फंसे हुए हो. आप लोग बहुत ज़्यादा, हो सकता है आगे बढ़ने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हो कहीं ना कहीं. प्लस आई एम गेटिंग म्यूज ऑफ वॉइसेस विच इज़ Ace of Wands. Yeah, so things will be definitely turning your way, as there is a world. If I'll go more depth, there is a devil, so I do not go in more depth. So yeah, things will be coming in your way very faster. आपकी चीज़ें जो है बहुत जल्दी आपके हाथों में आने वाली है डेफिनेटली. एंड आई कैन सी लाइक द पर्सन यू आर डीलिंग विद, बिफोर दे वर वेरी क्वाइट एंड दे वर लाइक ऑन ऑफ सिचुएशन विद यू. हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, पहले ना भी बोले थे. मोर ओवर मुझे ये भी दिख रहा है साफ साफ. प्लस इन्होंने आपको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में डाला हुआ है. ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या उन्होंने चीट किया हो आपको. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पेरेंट्स भी आ जाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पे रिलेटिव्स भी आ जाते हैं बीच में, एंड कुछ लोगों के यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हो. ओके, सो आप लोगों की सिचुएशन है, आपको पता होगा. बट यहाँ पे मुझे जो सिचुएशन नज़र आ रही है, यहाँ पे इनका काम बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज़ है एंड फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती है. ठीक है, तो आपकी जो फ्रेंड या कोई भी क्रश हो या डिवाइन काउंटर पार्ट है जिनसे आप डील कर रहे हो इस वक्त या मिलने वाले होंगे, आपका मामला थोड़ा शांत रहने वाला है. अभी आपको सकता है आप लोग जानते भी नहीं हो एक दूसरे को. सो कहीं ना कहीं आप भी वेट कर रहे हैं, ये भी वेट कर रहे हैं, वाइस वर्सा एनर्जी मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को. बट डेफिनेटली दिस थिंग विल सून टर्निंग इनटू एक्शन सून. वेरी सून थिंग्स विल बी कमिंग योर वे इन अ गुड डील. सो लेट्स चेक आउट योर angel romance. What is coming in your love after full moon, after new moon? What is coming in your love? Angel spirit, please guide me. Spirits, please guide me. What is therefore the card of the day for my clients, viewers, subscribers out here? And definitely you feel like going out somewhere. I feel like you want to travel out.
आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के मूड में दिख रहे हैं मुझे। कुछ लोग तो यहाँ मुझे मेडिटेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू वॉन्ट टू जस्ट मेडिटेट एंड कट विद पीपल अराउंड, कट विद दिस पर्सन यू आर डीलिंग विद। मे बी दिस पर्सन इज डिस्टर्बिंग यू अ लॉट। कभी हाँ कभी ना, खुद से डिसाइड कर लेते हैं। सो इट इज़ लाइक फॉर सम, ओके। सो डेफिनेटली दिस साइकिल विल बी स्विचिंग इन टू वर्ल्ड नाउ। योर मैं अब कैसे बोलूँ, लाइक येस, definitely the thing you want, it will be in your hand soon. The world will be in your hand. You can conquer the whole world soon now. It is possible, but you need to take action. You are not taking action. You are just not listening to your own voice. You have to listen to your inner voice, because there is three of wands. You are just waiting, and just waiting. You don't have to wait, and this person is also making you wait somehow, and this person is making you like totally irritating now. They are making you definitely irritate, so you don't have to wait for this person. And yeah, see, there is a deception. This person is hiding their feelings. I got this card at the end of the deck. So this person is hiding their feeling, as there is a moon card too. So yeah, so soon they were. Right now I feel like this person wants to come out of their hiding zones and लाइक छुपाना अपनी फीलिंग्स को। आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये हाइड, बिना हाइड करे हुए बाहर आ जाएंगे। आपको अपनी, हो सकता है उनको रियलाइजेशन हो रहा हो। सो लेट्स सी व्हाट माय कार्ड्स वांट टू से टू यू। देयर इज़ अ रिकन्सिलिएशन। तो आप लोगों का रीयूनियन हो जाएगा बहुत जल्द, एंड द न्यू लव वांट्स टू कम आउट, एंड अगेन डिसेप्शंस वांट्स टू कम आउट. So yeah, you need to trust the process. If you want to wait for this person, you need to trust. But for others, I am saying like there will be someone new coming out here, and if you're dealing with the new person, definitely they are coming out of their deceptions, and you will be reconciling with them soon. And for others, this person is lying somewhere, and you are dealing with your karmic partners for some. Right now I am getting that, okay. So soon things will be turning your way in a better way. So let's, you have to give your relationship a chance, guys, okay. There will be lots of conversation happening again now. So it's your call what you want to do. Let's check out your moon cards. What is there for in love and career for my viewers out here? Angel Spirit, please guide me. And this person can even be a Scorpio, Cancer, Pisces, Sun, Moon, Rising. Even you can be in this charts. Check out your birth chart circle. If you don't have trust in your card, so better check out astrology birth chart circle, because it will tell same somehow. So a time to gather, then take. So new moon in Virgo, so you could be even a Virgo. So yes, आपको अपने में टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। आप लोग अपने में आपको टाइम नहीं दे रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ लोग तो यहाँ पे भूल कर है कि क्या होएगा क्या नहीं, बट या यू नीड टू गिव योर सेल्फ अ टाइम. Bring love into the situation. New moon in Aquarius, so definitely there is a new love coming your way, okay. And let's see what is the end of the deck. Your hard work is paying off. New moon in Capricorn. Yeah, my nose is itching. Definitely a new love is coming to you, and this person is definitely wants to say you something. So your hard work is paying off. New moon in Capricorn. So definitely you could be sun, moon, rising, Aquarius, Virgo, and Capricorn, or Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, Cancer, Pisces, okay. So I'm getting these signs right now. So आपका जो हार्ड वर्क है वो डेफिनेटली पे ऑफ होने वाला है बहुत जल्दी, बिकॉज यूनिवर्स इज गाइडिंग देम एंड गाइडिंग यू, एंड एवरीथिंग विल बी सून वर्किंग ऑन डिवाइन टाइम. एंड डिवाइन टाइमिंग इज ऑल्सो समहाउ इज finishing up for some. You will be having a union and reunion, okay. So don't go with zodiacs. If you want to go with zodiacs, you can go, but go with situation, guys. If you are in my channel, you are a subscriber or follower, better see your situation. Don't see your zodiacs. It doesn't matter. Your situation does at the end. And some things will happen, some things will not happen. So it doesn't mean cards do lie, but cards don't lie basically. So take this thinking of, because my things have turned very accurate whenever I went to my other psychic friends or psychics or tarot card readers. Yes, things have turned very, very true. Very true. So
Thank you, and this was my general reading. Hope my reading resonated with you. Let me know on comment box. Don't forget to subscribe my channel at the rate of Mysterious Girl Soumya. And my five fastest winners are still left. So I'm still waiting for you all. If you are interested in one free reading, even if you are old client, and if you want to get, you have to just follow my 5 steps I've given. Tag your 5 friends in my last post, which I've given same clues, and subscribe my channel with send me with SS. And third thing is like, I'll give you your one free reading, one free question free. Okay, this is for some, and those old who have already come once are not allowed, but those old who haven't done, it is for only them right now. Okay, so thank you and have a nice day. Love you all. Bye bye.